we are going to study about the next topic which is the state of a system और यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं इंटरनल एनर्जी का. ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एंड हियर वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को वी विल डिफाइन इट एज यू. ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे नेक्स्ट लाइन पे इसको डिफाइन करते हैं. Let's say we're talking about internal energy and internal energy का सिंबल होता है U, कैपिटल U. ठीक है, सो ये हो गया हमारा टॉपिक नेम. नाउ लेट्स कंसीडर अ सिस्टम, कि हम यहाँ पर एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं कि वी हैव दिस थिंग, कि हमारे पास एक सिस्टम है. अभी यहाँ पर we are continuously exchanging two things. One is, let's say, एक हमारा बाहर जा रहा है, another is coming out, and यहाँ पर भी again one is going out, another is coming in. ठीक है, so one is in the form of a, let's say यहाँ पर हम heat ले लेते हैं, heat, and on the left hand side let's take it as work. ठीक है, सो हीट होगा और दूसरा होगा वर्क. सो हीट जो होगा, अगर इट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, सो हीट को वी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. सो हियर वी कैन से इट इज माइनस क्यू एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक. ठीक है, सो ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम इज इफ हीट इज कमिंग टू द सिस्टम ऑन द सिस्टम, मतलब अगर हीट हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है तो उस टाइम पे इट विल बी प्लस क्यू एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक. ठीक है, सो ये हमारा दो टाइप का हीट होगा. एट द सेम टाइम वर्क भी जो है हमारे दो टाइप के होंगे. एक होगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जो कि पॉजिटिव होगा, लेट्स से W प्लस एंड प्लस W, एंड हियर इट इज कॉल्ड एज ऑन द सिस्टम. और जो दूसरे टाइप का वर्क होगा तो दैट इज कॉल्ड एज माइनस W एंड इट इज बाय द सिस्टम. ठीक है, मीन्स दिस हियर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम बाय कंज्यूमिंग इट्स ओन एनर्जी. सो अब इसमें इंटरनल एनर्जी का कैसे कंसेप्ट यूज करेंगे. सो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ, लेट्स से यू के लिए हम लिख सकते हैं इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम. ठीक है, सो कोई भी सिस्टम का अगर हम सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी फिल डू, सो दैट इज गिवन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब यहाँ पर जो है वी विल मेजरली फोकस ऑन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और टू डिफरेंट टाइप ऑफ दिस एनर्जी कन्वर्जन. वन, एक जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और जो दूसरा एनर्जी कन्वर्जन होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. नाउ वी कैन राइट द इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा U एज U2 माइनस U1. ठीक है, वेर U2 इज अवर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज फाइनल स्टेट एंड दिस वाज अवर इनिशियल स्टेट. ठीक है, सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे सो दैट विल गिव यू डेल्टा U एंड इट इज ऑलवेज अ सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज एट द फाइनल सिस्टम माइनस सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी दैट वाज एट द इनिशियल स्टेट. ठीक है, बट इसमें अगर आप देखोगे जब भी हम इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, सो इन दैट केस एक्सेप्ट फॉर वर्क एंड हीट, क्योंकि ये मेजर कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी, बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगे उनका कंट्रीब्यूशन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. लाइक द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी वाइब्रेशनल मोशन के वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो मेनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी. बट हमको जो लेना है दैट वी हैव टू ओनली टेक वर्क एंड हीट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द चेंज इन Q प्लस W, दैट इज सम ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी प्लस सम ऑफ चेंज इन वर्क डन. सो इन दोनों का एडिशन करेंगे सो इट विल गिव यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आएगा. अब जैसे कि हम सेक्शन में ही देख रहे हैं कि दैट वी आर डूइंग दिस इनटू द स्टेट फंक्शन, ये रहा, बट ये हमको प्रूफ करता है दैट डेल्टा U जो है, डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, बट अगर आप देखोगे ये जो स्टेट फंक्शन फॉर्म हो रहा है दैट इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम Q एंड W, एंड Q एंड W आर पाथ फंक्शन. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था पहले इसके एग्जांपल्स में. लाइक Q एंड W, दैट इज हीट किस तरीके से फ्लो होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. एंड एट द सेम टाइम वर्क डन जो होगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में वो कैसे पहुंचेगा, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड.
सो दैट इज वाई Q प्लस W जो है दोनों की दोनों Q एंड W दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं, बट जो इंटरनल एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। सो इसीलिए हम यहाँ पर एक और नोट पॉइंट लिख सकते हैं, लाइक जो डेल्टा U होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड इट इज नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज नेवर एब्सोल्यूट and is always calculated as a change in value, as let's say डेल्टा u के फॉर्म में हम इसको हमेशा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगे दे आर नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि हम कभी भी कहते हैं कि फिक्स वैल्यू इन द सेंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सो टेम्परेचर जो एक फिक्स वैल्यू हो सकता है, जैसे कि 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन एंड सो ऑन, बट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हम कभी नहीं कह सकते हैं कि वो लेट्स से 200 जूल्स है या 500 जूल्स है, 1000 जूल्स है, बिकॉज हमको पता नहीं है लाइक स्पेसिफिक या कितना एफिशिएंट हमारा वो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट हुआ है। सो दैट इज वाई जब भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होंगे वी ऑलवेज कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू हम हमेशा निकालेंगे, एंड दैट वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर, दैट विल ऑलवेज गिव यू द एफिशिएंट आंसर, एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज internal energy or thermodynamic property, and it is never absolute value, ठीक है। So with this we had seen the internal energy property. Let's say we'll start with the work done topic. So here it is work done, which is represented by W, ठीक है। Now work done in our first process, हमको यहाँ पर actually में लिख देते हैं हम यहाँ पर, we have to calculate work done in 3 different process. एक है irreversible, other is reversible process, and third is in vacuum, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस में या इन तीनों कंडीशन में वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, दैट ऐसा कोई भी प्रोसेस जो सिर्फ इनिशियल रिएक्टेंट से इट विल गो बैक टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से वापस से वो रिएक्टेंट तक नहीं आ सकता है, सो इट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। अब ये केस में वी ऑलवेज डिफाइन अवर वर्क डन W एज द चेंज इन प्रेशर P एक्सटर्नल, एंड दैट टू एक्सटर्नल प्रेशर हम कंसिडर करेंगे, एंड यहाँ पर जो हमारा चेंज होगा हियर इट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज रिटन एज V2 माइनस V1, ठीक है। सो और यहाँ पर वी विल राइट इट एज अ नेगेटिव साइन, बिकॉज हमको पता नहीं है कि आगे वर्क डन जो है वो लाइक बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम होगा, बट जैसे आप एक नेगेटिव साइन लगाओगे सो दैट विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर। इसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस पी, ये V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट टाइप ऑफ अ वर्क डन, दैट इज इन केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका एक्चुअली में पूरा डेरिवेशन भी है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन जो हमने देखा था इन इररिवर्सिबल प्रोसेस में। वर्क डन जो है उसका डेरिवेशन हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो इररिवर्सिबल वर्क डन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक वन सिचुएशन दैट वी आर हैविंग अ कंटेनर इन विच वी आर हैविंग अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, लेट्स से हियर द प्रेशर अबव दिस पिस्टन इज P एक्सटर्नल, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इट वाज सीन that this piston was converted into a different position, and it was, let's say it was this position, ठीक है। and again here it will be external pressure, but here you can notice कि let's say ये external pressure को रिवर्ट ले लेते हैं, again it will be let's say P external, ठीक है। so here we can notice that the initial position of the piston was this one, but the final position was different, and here the volume, here we can see that here is our change in volume, that is delta V। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं let's say this is V1 and this volume is nothing but V2, ठीक है। अब ये चेंज के लिए हम जो है वेरिएबल्स लिखते हैं। so here we can first say that pressure is nothing but force upon area, so therefore we can say that force is equal to pressure into area, ठीक है। but let's say we know that work done is what, work done is equal to force into displacement, let's say force into displacement, which is nothing but अगर हम ये सेम चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक ये इक्वेशन let's say multiply this equation by length on both the side या distance on both the side, so this will give you force and displacement, force into displacement on left hand side, and right hand side में we'll get it as pressure into area into distance, ठीक है।
Now we know that area into distance, that is here it is meter square into meter, will be equal to meter cube, and this is equivalent to volume. So here this area into distance is converted into volume, and P जो यहाँ पर है, this given P here, this will be equivalent to P external, that is P E X T. ठीक है, so अभी इसको हम लिखते हैं that it is P E X T, and this will be our change in volume, that is delta V. But if you see like our final volume V2 is less than initial volume V1, so अगर हम इसको difference भी लेंगे V2 minus V1, so it will come as a negative value. So P external it will be multiplied by minus delta V, and इसको again अगर हम solve करेंगे, so it will give you minus P external then delta V, which is nothing but, let's say it is minus P external V2 minus V1. So this is our pressure volume work done in case of irreversible process, isothermal irreversible process. ठीक है, so ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो irreversible process में अकर होगा in order to calculate the pressure volume type of work. ठीक है, so now let's see the second type of work done, और वो है the work done which is done in reversible process. So यहाँ पर है we can say in reversible process. अब इस केस में जो वर्क डन होगा इट विल ऑलवेज गिव यू W max. लेट्स से यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं मैक्सिमम वर्क डन W max, एंड इट एक्चुअली कैलकुलेटेड एज कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. अब इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ अ V1 टू अ वॉल्यूम ऑफ V2 इन रिवर्सिबल प्रोसेस. जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं तो इसमें जो हमारा वर्क डन होगा इट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स में कैरी आउट होगा. सो इट इज कैरिड आउट इनटू मल्टीपल स्मॉल स्टेप, एंड दैट इज वाई जो हमारे यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी, इट विल नाउ बी रिप्लेस बाय स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डी. ठीक है, और ये सारे स्टेप्स ऐसे जितने भी छोटे स्टेप है अकरिंग बिटवीन इनिशियल वॉल्यूम V1 टू द फाइनल वॉल्यूम V2, इन सबको हम ऐड अप करेंगे, एंड ऐड करना मीन्स दैट मीन्स वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन प्रोसेस. सो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू लिखा, हमने जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं. लेट्स से इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू V1 टू V2, एंड हियर वी कैन राइट P माइनस P एक्सटर्नल, एंड हियर इट विल बी dV. ठीक है, अब ये इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. नाउ वी नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन दैट प्रेशर इज नथिंग बट PV इज इक्वल टू nRT. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस लाइक प्रेशर के टर्म्स में हमको पूरा आइडियल गैस इक्वेशन चेंज करना है, एंड देन वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस एक्सटर्नल प्रेशर यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन. सो हियर वी कैन से दैट सिंस PV is equal to nRT, so this implies that value of P is nothing but nRT upon V. ठीक है, अब हम यहाँ पर हम इंटीग्रेशन वाले वैल्यू में यहाँ पर पुट करते हैं. therefore the work done will be equal to integration from V1 to V2, and this will take place at minus of, let's say, nRT upon V, and this will be at dV. ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल मिल गया V, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dV होने वाला है, और nRT जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो लेट्स से हम यहाँ पर ले लेते हैं V1 V2 एंड nRT विल बी कांस्टेंट, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से nRT एंड देन dV अपॉन V, एंड वी नो 1 by V का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सो दैट विल गिव यू नथिंग बट द log of V. सो हियर वी कैन से दैट इट विल बी nRT कांस्टेंट, एंड देन यहाँ पर होगा जो ln log to the base e वॉल्यूम, एंड इट विल बी फ्रॉम V1 टू V2, और जैसे आप वैल्यू पुट करोगे सो दिस विल गिव यू, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन रह गया था, नेगेटिव नेगेटिव माइनस nRT, एंड हियर इट विल बी log base e, that is ln V2 upon V1. It will be minus nRT then ln V2 minus ln V1, और उसको हम log of a minus log of V is always log of a upon b. So here it is written as log of ln V2 upon V1. अब ये बेस e है, सो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे टू द बेस 10, सो इट कैन बी लाइक सिंपली हमारे यहाँ पर फैक्टर जो है 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल बी माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. So this is our final equation in which we can write the W max value as a, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको W max
maximum work done as minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन विच इज द मैक्सिमम वर्क डन दैट वी कैन गेट फ्रॉम एनी लाइक वो जो तीन टाइप हमने लिखे हैं सबसे ज्यादा जो वर्क डन होगा दैट इज सीन इन ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस. Now let's see the third type of process which is in vacuum or free expansion. So now let's see the work done in our third process that is in vacuum. So we know that vacuum में जो external pressure होगा that is always equal to zero. So can we say अगर हम work done का formula लिखते हैं minus P external into delta V. So क्योंकि यहाँ पर हमारा pressure का value zero है, so zero into delta V will nothing be, it will be 0 joules only. So here whenever the work done is carried out, whenever we are calculating the work in a vacuum, it is always coming as 0 joule. It doesn't matter आपका क्या condition दिया है, कितने variables दिए हैं, कितने properties दी हैं, whenever it is carried out in vacuum, so the work done is always going to be 0 value. ठीक है. And can we say ये 0 value हमको minimum value देता है? Let's say W here, it will be minimum. Minimum with respect to we are talking about energy, not the positive and negative sign, because positive and negative sign हमको just बताएगा कि work is done on the system या by the system है. ठीक है. So 0 joule means there is nothing change in the system जो है अपना कोई भी energy lose या gain नहीं करता है during the vacuum expansion और compression. ठीक है. So यहाँ पर एक बार हम just summarize कर लेते हैं all the three type of work done, types of work done. ठीक है. So here so let's see in first type that is in irreversible process. Here the work done W was equal to minus P external delta V, but we know like PV is equal to nRT, so we can write the same equation minus P delta V as minus delta nRT also. ठीक है. और यहाँ पर जो हमको चेंज निकालना है दैट वी हैव टू ओनली कैलकुलेट फॉर नंबर ऑफ मोल्स. आर इज ऑलरेडी कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ये जो तीनों टाइप के हमने वर्क डन देखे दैट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. So R and T both will remain constant and delta N will be our the change or the variable factor. And second type का work done जो था that is in reversible process. So here we calculated work as maximum work done and his value was minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. Now according to Boyle's law, this V2 upon V1 can also be written as in terms of pressure. So we can write like minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेफरेंस में प्रेशर P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. ठीक है. So here we can write according to Boyle's law that pressure 1 upon pressure 2 is volume 2 upon volume 1. And जो थर्ड टाइप का हमारा वर्क डन होगा that is in vacuum. And we know that vacuum में no matter what the conditions are, work done is always 0 joules या 0 calorie. जिस भी आप यूनिट में मेजर करोगे हमेशा the work will be 0 only. So these are our three different type of work done that we can have in isothermal processes. ठीक है. So with this we had covered like all the three type of work. अब इसी वर्क का आप यूज करके आप अपने इंटरनल एनर्जी के वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो. नाउ इफ यू सी लाइक हमने इंटरनल एनर्जी के टाइम पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था माइनस पी डेल्टा वी. सो सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस वन ऑल्सो माइनस डेल्टा एनआरटी. So let's see what will be the different terms in which we can express the internal energy of a system after looking at the isothermal process में work done. ठीक है. So here we are going to see the ways, different ways, let's say ways. Here we are going to see the different ways for writing delta U, that is internal energy. So हमको पता है that delta U is nothing but let's say U2 minus U1. Then this is same as here we can say it is same as Q
plus W. But we know work done can also be written in terms of minus P external delta V. And it can also be written as Q minus delta nRT. So these are different ways in which we can write delta U for our system. ठीक है. Now delta U इसी के साथ में we can define our first law of thermodynamics also. So here we can say, let's say first law of thermodynamics, let's say of thermo. So it states that internal energy in an isolated system is always constant. Isolated system is always constant. That means what? कि जब भी हमारा एक isolated system होगा, that means nothing is allowed to change from the system. So वो case में internal energy of the system will always remain constant. Or it can be also said in this manner that it is law of conservation of energy. अब इसका एक और स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, ये सेम ही जो फर्स्ट लॉ हमने लिखा हुआ है, that energy can neither be created nor be destroyed, but it is converted from one form to another form. ठीक है. So these are different ways in which we can express the first law of thermodynamics. The best way here we can see is the internal energy of an isolated system is always constant. ठीक है. So with this, we have finished our first section of the chapter, which is the internal energy and the type of work done. So next video we are going to cover about the most important section of this chapter, which is the enthalpy, or फिर उसके different variants that we can have it as enthalpy.